Assalamu alaikum, dear students. Today, exercise 11C, page number 289. Question number 7. Statement of the question is: if the size of the interior angles of a polygon are 2x, 3x, 4x, 5x, and 6x, find the largest interior angle of the polygon. In this question, the polygon being discussed is a pentagon. So, sum of all interior angles of pentagon equal to 5 minus 2 multiplied by 180. So, 2x plus 3x plus 4x plus 5x plus 6x equal to 540. ये देखिए, ये सारे एंगल्स अगर आप देखें तो कितना 1 2 3 4 5 एंगल्स हैं because of the pentagon. So their sum is equal to 540. Now this is an algebraic equation. Solve it and find out the value of x. This way 20x equal to 540. So x equal to 27 degree. So the largest interior angle of the pentagon is equal to 6 multiplied by the value of x equal to 162 degree. Right? Now the next question. Question number 8. Statement of the question is: the exterior angles of a triangle are 3y, 4y and 5y. Number 1. Find the value of y. Number 2. Find the smallest interior angle of the triangle. Right? Here is a triangle where 3x, 4x and 5x are the exterior angles of this triangle. Then, to find out the value of y, we'll add up all these exterior angles and equate it to, yes, sum of all the exterior angles of any polygon equal to क्या होता है 360. Yes, solving this like an algebraic equation, we'll find out the value of y. 12y equal to 360. This way y equal to 30 degree. Now in part 2, smallest interior angle of the triangle. देखिए, smallest interior angle find out करने के लिए you know that the exterior angle and the interior angle are supplementary to one another. In the same way this one, in the same way this one. तो जितना बड़ा कोई एक्सटीरियर एंगल होगा उससे कंसर्न इंटीरियर एंगल जाहिर सी बात है उतना ही छोटा होगा. तो सबसे छोटे एक्सटीरियर एंगल से कंसर्न इंटीरियर एंगल बड़ा होगा और सबसे बड़े एक्सटीरियर एंगल से कंसर्न इंटीरियर एंगल स्मॉलेस्ट इंटीरियर एंगल होगा. राइट? सो इट इज इक्वल टू 180 minus 5y, and y we have found equal to 30 degree. So 180 minus 150 equal to 30 degree. So the smallest interior angle is equal to 30 degree. Right? Now the next question, number 9. Statement of the question is: the statement is 3 of the exterior angles of an n-sided polygon are 15 degree, 25 degree and 70 degree, and the remaining exterior angles are 50 degree each. Find the value of n. Right? Now for the solution of this question, as this is n-sided polygon, so in this figure the number of exterior angles would also be of equal to n. Right?
So this way, adding up all the exterior angles of this n-gon means a polygon of n sides. देखिए ये हमें गिवन 15 plus 25 plus 70 and rest of the exterior angles are 50 degree each. तो टोटल नंबर ऑफ एंगल्स थे n, 3 हमें गिवन है और बाकी हैं 50 डिग्री ईच. सो n minus 3 मल्टीप्लाइड बाय 50 डिग्री और सम इन सारों का इक्वल टू 360. नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n. दिस वे 110 plus 50n minus 150 equal to 360. This way 50n equal to 400. As this 40 shifted to the right with change in its sign. Now n would be equal to this 400 divided by 50. So n equal to 8. So this polygon is octagon, means this polygon has 8 sides. Now question number 10, statement of the question is, the statement is 3 of the exterior angles of an n-sided polygon are 50 degree each. 2 of its interior angles are 127 degree and 135 degree, and the remaining interior angles are 173 each. Find the value of n. Now solution of this question. It is given that 3 of the exterior angles of polygon equal to 50 degree each. यानी 50 डिग्री एक है, 50 डिग्री दूसरा है, 50 डिग्री तीसरा है. तो 3 of the interior angles of the polygon, obviously it would be 180 minus 50 degree. So 130 degree each. वो जो 3 एंगल्स जिनमें एक्सटीरियर एंगल्स 50-50 डिग्री होंगे, तो इंटीरियर एंगल 130 डिग्री होगा, राइट? देन you know sum of all the interior angles of a polygon is equal to n minus 2 multiplied by 180. अब देखिए 3 multiplied by 130, क्योंकि 3 एंगल्स जो हैं वो 130 ईच है, प्लस फोर्थ एंगल 127 डिग्री, फिफ्थ एंगल 135 डिग्री. अब ये रेस्ट ऑफ द angles are 173 degree each. So n minus 5 multiplied by 173. अब इन सबको हम ऐड अप कर दें तो is equal to n minus 2 multiplied by 180. Now this is an equation. Solving it, find out the value of n. Now we solve it. This way 390 plus 127 plus 135 plus 173n minus 173 multiplied by 5, 865 equal to 180n minus 360. 173n minus 213 equal to 180n minus 360. This 180n shifted towards left with change in its sign, and 213 shifted towards right with change in its sign. Then dividing both the sides by coefficient of variable minus 7. So n equal to 21. When n equal to 21, it means
the polygon which is discussed in this question has 21 sides, right? Now the next question, number 11. Statement of the question 11 is A, B, C, D, E, F, G is a regular heptagon. If AB and DC are produced to meet at H, find the value of the angle BHC, right? In this question number 11, this is a heptagon A, B, C, D, E, F, G, means it has 7 sides. The regular heptagon this is, ये तमाम sides आपस में equal हैं और इसी तरह से इनके इंटरनल एंगल्स भी आपस में इक्वल हैं, राइट? अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट वी हैव प्रोड्यूस्ड ए बी एंड डी सी टू मीट एट अ पॉइंट एच. यहाँ पर जो एंगल एच पर बन रहा है बी एच सी, हमने ये फाइंड आउट करना है. क्लियर? देखिए ये एंगल एट एच फाइंड आउट करने के लिए हम कंसिडर करेंगे द ट्राइंगल बी सी एच, ठीक है? और उसमें ये एंगल एट द पॉइंट एच हमें फाइंड आउट करना है. हमें एट द पॉइंट बी जो एंगल एच बी सी है ये मालूम हो और एंगल एच सी बी ये एंगल हमें मालूम हो तो हम ये बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं. अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि ये एंगल एट पॉइंट सी जो ये एंगल बन रहा है और ये एट पॉइंट बी जो ये एंगल बन रहा है, इनकी हकीकत क्या है. In the actual, these are the exterior angles of the polygon, right? तो ये exterior angle हम find out करेंगे पहले और फिर ये हमारे लिए known angles हो जाएंगे. Then we will find out considering the triangle BCH, ये unknown angle at point H हम find out कर लेंगे. You know, sum of all the exterior angles in a polygon is equal to 360. Now the size of each exterior angle in this polygon, यानी ये जो B पे एंगल बन रहा है या C पे जो एंगल बन रहा है, this is equal to 360 sum of all the exterior angles divided by number of the sides it has. So the size of each exterior angle is equal to 51.4 degree. अब इस triangle के अंदर, in this triangle we say that angle B यानी CBH or at the point C angle BCH, these are 51.4 degree. This is also 51.4 degree. ये नॉन एंगल हो गए हमारे लिए और ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है. नाउ इन द ट्राइंगल बी सी एच, सी बी एच प्लस बी सी एच प्लस एच इज इक्वल टू 180, एंगल सम ऑफ ट्राइंगल. दिस वे 51.4 plus 51.4 plus h is equal to 180. This way h is equal to 180 minus 102.8. Hence BCH is equal to 77.2 degree. Now question number 12. Statement of the question is the points A, B, C and D are consecutive vertices of a regular polygon with 20 sides. Find the angle ABC. Number 2, the angle ABD. In this question number 12, this is a part of a polygon with 20 sides. Now watch it. This AB, BC and CD, the 3 sides of that polygon are under discussion. Over here, first part is about this angle at the point B. This angle we have to find out. तो ये कौन सा एंगल होगा? Don't you think this is the interior angle of a regular polygon of
20 sides, right? So we find out sum of all the internal angles of pentagon is equal to 20 minus 2 multiplied by 180 results 3240 degree. Now size of each interior angle equal to 3240 divided by number of sides 20 divided by 20 equal to 162 degree. Hence एंगल ABC इज इक्वल टू 162 डिग्री. देखिए ना, जो एंगल B पर जो एंगल बन रहा है ABC, दिस इज वन अमंग द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द polygon having 20 sides. So we are justified to say that ABC is equal to 162 degree. Now to find out the angle ABD in second part, this B is joined with D, and this angle ABD we have to find out another angle which is being made on the point B as ABD. To find out this ABD, to find out the angle ABD, first we will find out at the point B angle DBC, and then this DBC will be subtracted from this ABC 162 में से उसको हम माइनस कर देंगे. पूरा ये एंगल 162 था ना, उसमें से ये एंगल माइनस कर देंगे तो हमें ABD एंगल मिल जाएगा. नाउ टू फाइंड आउट एंगल DBC, ये देखिए दिस एंगल, this is equal to this angle. Why these are equal to one another? Because whole this figure was a regular pentagon where all the sides are equal to one another. तो जाहिर सी बात है कि इस ट्राइंगल के अंदर भी तो ये दो साइड्स इक्वल होंगी ना. These two sides BC and CD are equal in measurement, and the angle at the point C, वो क्या होगा? पॉइंट C पर जो एंगल बन रहा है एंगल BCD, ये भी तो इंटीरियर एंगल है ना. जैसे B पर इंटीरियर एंगल हमने हासिल किया था ABC, इन द सेम वे दिस इज द इंटीरियर एंगल. सो दिस इज ऑफ 162 डिग्री, ये हमें मिला हुआ है. और BCD इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, सो easily we can find out this angle, right? मैं इस एंगल को नाम दे रहा हूँ स्मॉल b का. तो जैसे ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, BCD इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, सो दिस एंगल B and this angle should also be of the same measurement. So in triangle BCD, this way sum of all the interior angles of the triangle BCD would be equal to 180 degree. Now solve it just like an equation. 2B equal to 180 minus 162. This way angle B equal to 9 degree. Now to find out the angle ABD, we'll subtract from ABC this angle B. ये देखिए, ये पूरा जो एंगल यहाँ से ये बन रहा था 162, उसमें से ये 9 डिग्री एंगल हम माइनस कर देंगे तो हमें ABD मिल जाएगा. ठीक है, जैसे फर्स्ट पार्ट में हमने फाइंड आउट किया था एंगल ABC, दैट वाज ऑफ 162 डिग्री. पूरा एंगल 162 डिग्री था, उसमें से ये 9 डिग्री, ये छोटा एंगल कौन सा, DBC, ये हम उसमें से माइनस कर देंगे तो ये एंगल हमें मिल जाएगा ABD, राइट. सो ये एंगल ABD होगा 162 minus 9 degree. This way ABD we have found 153 degree, right?
This way we have concluded exercise 11C. See you in the next lesson. All the best. Allah Hafiz.